We are going to discuss today the primary key. First of all, we will discuss its basic definition, and then we will discuss a few examples so that you can understand what exactly the primary key is. So in the today's contents, we will discuss about the primary key's definition, alternate definition of the primary key, and the primary key examples and related issues. So what is exactly the primary key is? Recent lectures normally showing you the candidate keys and super key. Super key is basically a conceptual key that basically normally come up for the concepts to understand the uniqueness of the record. So basic idea again is there that how we can distinguish one record from the other. यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड को आप समझते हैं कि किसी दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको कोई कॉलम चाहिए और वो कॉलम जो है वो आपके लिए यूनिकनेस क्रिएट कर सकता है. जैसे मैंने रिसेंट एग्जांपल्स में ये बताया है कि CNAC आपका एक यूनिक कॉलम को शो करता है और वन CNAC इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन इफ इट इज नोन. So similarly, primary key we're going to discuss with its definition that it is a candidate key. Basically, it is used for the searching purposes. In this particular case, candidate key will give you the unique records. The unique record means that one record, if it exists, will come up, not more than one will come up. Otherwise, it will be a candidate key but not a primary key. So primary key means that it will show at most one record if the record exists. So there are few characteristics of the primary key. There is one and only one primary key in one table or relation. Primary key is not null and indexed, and unique means that it will give you a unique data so that it can be differentiated from the other one. Ideal primary key is normally short, numeric or alphanumeric, indexed, fixed length, and never changes. Fixed length means that if you go to any bank, they will give you account number and you will count the digits of the account number. Those will be either 13, 11 or 15 for all the customers of that particular bank. So maybe in one bank they are using 13 letters or characters, maybe in another bank they are using 16 or 17. So it depends on enterprise to enterprise. So primary key is basically it has a ownership of the organization. Means that roll number will come up from the university, and particular university same roll number will not be used in another university. So ownership is very important for the primary key. So these are the basic characteristics of the primary keys. Primary key is always single column, यानी ये हमेशा एक ही कॉलम की होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ रिलेशंस में आपको एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए होते हैं जहां पे आपको यूनिकनेस शो करनी पड़ती है. इस तरह के कॉलम्स को हम कहते हैं कंपोजिट की. Alternate definition of the primary key means is a minimum identifier that is used to identify tuples uniquely. So minimal means that maybe two columns will give you uniqueness, but you have to decide based on the properties, that based on the characteristics we studied in the last slide, that ownership should be there and fixed length should be there, index should be there, not null should be there. So this means that no subset of primary key is sufficient to provide the unique identification. So in some cases, let's suppose there are three columns that will give you a kind of search of few records, but out of three, two will be basically managed and two will be considered as a composite key. In the normal case, primary key will be managed just like a single column, and out of three, one column should be a primary key with the characteristics and definition that we recently discussed. The other one is basically primary key is normally, some issues normally arise. Students get confused with these things, that how we decide it. First of all, they have to see that the primary key should be under the ownership of some organization. आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ प्राइमरी कीज बनानी पड़ेंगी. यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कहते हैं जी एम्प्लॉय नंबर है, तो आप उनसे कहेंगे जी कि मुझे एम्प्लॉय नंबर अगर बने हुए हैं तो वो दे दें, अगर नहीं बने हुए हैं तो फिर आप उनसे डिस्कस करेंगे.
कि हमें कौन कौन से और कैसे प्राइमरी कीज या एम्प्लॉयज नंबर बनाने होंगे। इसी तरीके से एक पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो बुक्स को पब्लिश करती है और बुक्स पब्लिश करते वक्त वो डिसाइड करती है कि हमने इसको कोई बुक आईडी देना है, जैसे ISSN या कोई और आइडेंटिफायर आपने मैनेज करना है, तो आप उसको डिसीजन लेंगे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और डिस्कशन के बाद आप फैसला करेंगे कि इसकी प्राइमरी की क्या है। जिस तरह ये रोल नंबर दिया हुआ है या स्टूडेंट ID आपको दिया हुआ है, तो विद इन दी यूनिवर्सिटी आप इसको एक यूनिक कॉलम आइडेंटिफाई करेंगे और सारे के सारे स्टूडेंट ID से आइडेंटिफाई होंगे। इसी तरीके से जो है आपको कुछ कॉलम ऐसे लेने होंगे जो कि आप नहीं ले सकते। वो कॉलम ऐसे हैं जैसे क्वांटिटी है, से सैलरी है, प्राइस है या डेट है। डेट को नॉर्मली कंट्रोवर्शियल समझा जाता है और डेट शुड नॉट बी कंसिडर्ड प्राइमरी की बिकॉज इट कंटेन्स time with hours, minutes and seconds, even nanoseconds. So with nanosecond change will create another record or another value. So that's why I try to avoid date as a primary key. And quantity, sales price and other liquefied columns should be avoided to make the primary key.